Hello everyone. So in this video we'll discuss about local extreme points. हमने पहले global extreme points discuss किया था and in this section we'll discuss about local extreme points. ठीक है. So now the point that we have already considered C, C1, C2 till Cn is said to be a local maxima. So it is said to be a local maximum point of f in set S if local maximum कब होगा जब f of x is always less than equals to f of c for all x which are for all x in the set S in S which are sufficiently close to C. तो बेसिकली हम एक स्पेसिफिक इंटरवल में चेक कर रहे हैं कि उस फंक्शन का मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है. सपोज दिस इज अवर इंटरवल, तो इस इंटरवल में दिस वुड बी अ लोकल मैक्सिमा. सिमिलरली इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, तीनों मैक्सिमा है फॉर द स्पेसिफिक इंटरवल्स, बट ग्लोबली सिर्फ ये मैक्सिमा होगा. ठीक है. तो f of c is greater than equals to f of x for all x's which are close to c. मतलब जैसे अगर ये c है तो इसके अराउंड ये वाले एक्सेस, ये सारे एक्सेस में f of c is greater than f of x. ठीक है. तब ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो बेसिकली इसको क्या हम और कैसे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर आर सच दैट f of x is less than equals to f of c for all x in S with x minus c is less than r. ठीक है. r पॉजिटिव नंबर था, दिस कैन बी रिटन एज x इज लेस देन r प्लस c. तो ये एक सफिशिएंटली क्लोज इंटरवल हो गया. ठीक है. तो ये लोकल मैक्सिमम हो जाएगा. सिमिलरली f of x ग्रेटर देन इक्वल टू f of d फॉर ऑल x in r, x in S with when x is very close to r, वेरी क्लोज टू सी. तो ये लोकल मिनिमम हो जाएगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट उस सेट के इंटीरियर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे लोकल एक्सट्रीम पॉइंट अगर कोई आ रहा है इंटीरियर पॉइंट पे, तो वी नो स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं उसको. तो स्टेशनरी पॉइंट पे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर जीरो. फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर जीरो, राइट. ठीक है. बट ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन है, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन. ये हमने पहले भी पढ़ा है. दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट. ठीक है. तो बेसिकली अगर एक स्टेशनरी पॉइंट है, दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो लोकल मिनिमा या लोकल मतलब बेसिकली लोकल एक्सट्रीम पॉइंट है, ना तो लोकल मिनिमम ना लोकल मैक्सिमम. ठीक है. तो अ स्टेशनरी पॉइंट, इसका हम एग्जांपल भी करते हैं. अ स्टेशनरी पॉइंट C of f that is neither a local maxima or a local minima. It is called a saddle point. ठीक है. हम एक एग्जांपल करते हैं. It is called a
सैडल पॉइंट ऑफ एफ। एक एग्जांपल करते दैट वुड मेक थिंग्स मोर क्लियर। एग्जांपल 17.7. So what we have is show that 0 0 is a saddle point of fxy equals to x square minus y square. Now look at this. ठीक है, हम ये चेक करें स्टेशनरी पॉइंट है। फर्स्टली वी नो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स जीरो क्या होगा, वाई जीरो, तो द फंक्शन बिकम्स एक्स स्क्वायर। तो दिस इज तो ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो अगर हम ओरिजिनल के पास जा रहे हैं फ्रॉम आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, this value is always greater than 0. Similarly, on the other hand, f of 0y, x 0 है तो this would become minus y square, and this is always negative as we are approaching origin from either upward direction or downward direction. ठीक है, तो f of 0 0 is coming out to be a saddle point. क्योंकि ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा, इट डिपेंड्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वैल्यू वो कभी तो अगर थ्रू द एक्स एक्सिस आ रही है तो वैल्यू इज ऑलवेज गेटिंग, मतलब इफ़ यू आर गेटिंग क्लोज टू द ओरिजिन थ्रू द एक्स एक्सिस तो द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इफ़ यू आर गेटिंग क्लोजर टू द ओरिजिन थ्रू द वाई एक्सिस द वैल्यू इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो ओरिजिन पे वो वैल्यूज चेंज कर रही है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन्स हो गए। एवरी पीक, हर पीक एक लोकल मैक्सिमा हो रहा है, बट जो सबसे हाईएस्ट पीक होगी दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, जो लेक्स के नीचे डीपेस्ट पॉइंट होगा दैट वुड बी द लोकल मिनिमा, एंड जैसे ये माउंटेन पासेस होंगे ये पॉइंट्स, तो दीज आर द सैडल पॉइंट्स। ओके, नाउ जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते फंक्शन के, द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन, अभी 3 टाइप के हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड सैडल पॉइंट्स। ठीक है, अब केस कंसीडर करते हैं। सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस for functions of 2 variables. Firstly, we have the function z equals to f of xy, which is defined on the domain S. So let's assume that x naught y naught is a stationary point and is an interior point as well, मतलब which is a part of the domain as well. ठीक है, तो अगर स्टेशनरी पॉइंट है तो वी नो दिस कंडीशन f1 डैश x नॉट y नॉट शुड बी 0 एंड f2 डैश x नॉट y नॉट शुड बी 0 एज वेल। देन व्हाट वी नो इज या तो x नॉट y नॉट लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट होगा, राइट। नाउ लेट्स कंसीडर द फर्स्ट केस कि ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो अगर ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है तो हमें पता है कि z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई का मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो एक जी एक्स फंक्शन लेते हैं विच कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ
एक्स कॉमा वाई नॉट। तो बेसिकली हम वाई नॉट को फिक्स कर दिया हमने, वाई को फिक्स कर दिया वाई नॉट पे, एंड एक फंक्शन लेते हैं सिमिलरली एफ ऑफ एक्स को फिक्स कर दिया एंड वाई को वेरी करेंगे। ठीक है, नाउ अब ये बिहेवियर बताएगा along the function when y equals to y naught। ये लाइन फिक्स along the straight line y equals to y naught, एंड ये फंक्शन बताएगा जब x equals to x naught है तो उसके along y पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, y के इम्पैक्ट से फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब हमें पता है कि वो फाइनल फंक्शन x नॉट y नॉट पे मैक्सिमम है, तो जब ये y इक्वल्स टू y नॉट है तो x इक्वल्स टू x नॉट पे मैक्सिमम होगा, एंड सिमिलरली इस केस में x इक्वल्स टू x नॉट है तो y इक्वल्स टू y नॉट पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस मीन्स g डबल डैश एट x नॉट शुड बी लेस देन 0, एंड g डबल डैश x नॉट इज नथिंग बट f11 x नॉट y नॉट, क्योंकि y नॉट को तो फिक्स ले रखा था तो पार्शियल डेरिवेटिव्स विल गिव यू दिस। ठीक है, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव बिकॉज मैक्सिमम है, एंड दिस इज गिविंग दिस थिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम h डबल डैश y नॉट की बात करें, सो दिस इज f22 x नॉट y नॉट, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एज वेल। ओके, but if we have the case that g double dash x naught is strictly less than 0 and h double dash y naught is strictly less than 0, अगर strictly less than है then we know that x naught y naught would give you a local maximum point। The same thing can be said that when f11 x naught y naught is less than 0 and f22 not double dash x naught y naught is less than 0, then fxy has a local maxima in the directions। अब डायरेक्शंस क्या आ गई थी, क्योंकि हमने इस केस में y इक्वल्स टू वाई नॉट फिक्स कर रखा था एंड इस केस में x इक्वल्स टू एक्स नॉट। सो इन द डायरेक्शंस थ्रू जो हम जिस पॉइंट पे निकाला x नॉट y नॉट दैट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि जो हमने y इक्वल्स टू वाई नॉट फिक्स किया तो वो कर्व ऐसे होगा y इक्वल्स टू वाई नॉट। ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट ऐसे फिक्स होगा, तो हमने एक को फिक्स करके देन वी आर चेकिंग द वैल्यू फॉर द फंक्शन, तो वो डायरेक्शंस इसके पैरेलल चल रही है दोनों के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि एक चीज़ को फिक्स रखा देन वी आर फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ बट ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बता दिया ना, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जा रही है, बट अगर हम अदर डायरेक्शंस की बात करें तो वी आर नॉट श्योर कि क्या, तो सिर्फ f11 डबल डैश और f22 डबल डैश हमें नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस अदर दैन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें सिर्फ ये नहीं, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द other second order derivatives as well, which are nothing but the mixed second order derivatives f12 and f21, and you should know by Young's theorem that both of them are equal। okay, I hope this is clear। okay, let's do an example first and then we'll do two more examples and then we'll stop। okay, example 17.8, now study the behavior of
the function is fxy equals to 3xy minus x square minus y square along the lines y equals to 0, x equals to 0 and y equals to x. So the first case when y equals to 0, so the function is fx0, which becomes, this becomes 0 minus x square minus 0. So this is minus x square. Now given this function, this would be maximum. अगर माइनस साइन है तो x की कुछ भी वैल्यू हो तो ये तो नेगेटिव ही जाता रहेगा, तो दिस वुड बिकम मैक्सिमम at x equals to 0, and the value of the function would be f of 0 0 would be 0, right? Similarly f of 0y, this would become 0 minus 0 minus y square. Okay, so this would be minus y square and this would be maximum at y equals to 0, and the value of the function would be f of 0 0 still 0. Now what we have seen is when we are moving in the x, we are moving towards the origin, ठीक है, in the direction of the origin from the x axis or the y axis, the function value is maximum at the origin in both the x and y direction, x and y directions. But now let's take the case when y equals to x. So the function would become 3x square minus x square minus y was equals to x square only. So this becomes x square. At x square, this would be minimum. देखो हमने ये केस लिया when y was 0, this one. So this is the case when x is 0 and this is the case when y equals to x. So this would be minimum when x is 0 and the value of the function would be 0. So what we have seen is जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ओरिजिन में इन बोथ द एक्स एंड वाई डायरेक्शन. तो जब हम दोनों एक्स एंड वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं, जब एक डायरेक्शन थी व्हेन y इक्वल्स टू 0, एक डायरेक्शन है x इक्वल्स टू 0, अलग अलग, देन फंक्शन मैक्सिमम अटेन कर रहा है एट द ओरिजिन ओनली. बट जब दोनों बराबर है तो फंक्शन मिनिमम ऑब्टेन कर रहा है एट 0 0. ओके, सो व्हाट वी कैन से इज, कभी तो वो उस पॉइंट पे मिनिमम कर रहा है, कभी मैक्सिमम कर रहा है. सो व्हाट वी कैन से इट इज़ द स्टेशनरी पॉइंट इज अ सैडल पॉइंट. ठीक है, वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट द stationary point in this case is a the stationary point in this case is a saddle point, and it depends on which direction we are coming from. Okay, also you can see that f double dash at 0 0, derivating it with respect to 1 again. So this would be 3y minus derivative of this 2x d by dx. So this is minus 2, this is less than 0. f 2 2, this would be d by dy times 3x minus 2y. So this becomes minus 2 as well. Both are less than 0, but still we have a saddle point. So this means we need to take into consideration f12 and f21, and this is, they are equal because of Young's theorem. ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं. दिस इज थ्योरम 17.5. These are the
second derivative test for functions of two variables. So what we have is, अगर एक फंक्शन है fxy जिसकी कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है in domain S and let x naught y naught be an interior point. Be an interior point of S that is a stationary point for f. Then we can write a equals to f11 at x naught y naught, b equals to f12 x naught y naught, and c equals to f22 x naught y naught. So we can come to the conclusion that these are the important conclusions that you can write. The conclusions are, firstly, if a is less than 0 and ac minus b square is greater than 0, then x naught y naught स्टेशनरी पॉइंट तो था, तो या तो वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या सैडल पॉइंट होगा, इज अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट. Similarly, if a is greater than 0 and ac minus b square is greater than 0, then the point x naught y naught is a local minimum point. The third case is when ac minus b square is less than 0, then x naught y naught is a saddle point. And the last case, ठीक है, ये थोड़े important है, तो you should, if ac minus b square equals to 0, then x naught y naught could be a local max, local min, or a saddle point. So in this case we are not sure what it would be. ठीक है, तो this is important. I'm marking so that notes में तुम पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे काफ़ी. Firstly, a less than 0, ac minus b square greater than 0, तो local maxima. a greater than 0, ac minus b square greater than 0, तो local minima. पहले local maxima. If ac minus b square is less than 0, saddle point, equals to 0, it could be anything. Okay. अब एक केस करते हैं फर्स्ट. अब देखो, जो कंडीशन है फर्स्ट वाली, a less than 0 and ac minus b square greater than 0. This implies ac is greater than b square and which is still greater than equal to 0. तो तभी वो ac minus b square is greater than 0 आ रहा है. अब नाउ अगर हम इसको a से डिवाइड करें, राइट, एंड अगर हम इसको a से डिवाइड करें, सो एंड वी नो दैट a इज़ अ नेगेटिव नंबर. हमें पता है a इज़ अ नेगेटिव नंबर, एंड इस इनइक्वालिटी को अगर हम a से डिवाइड करें,
एक से, ठीक है। हाँ, अब हमें पता है ऑलरेडी इस केस में a इज़ अ नेगेटिव नंबर। सो अगर हम इस इनइक्वालिटी को a से डिवाइड करें, सो व्हाट वी गेट इज c इज़ कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी ना, ए सी बाय ए से डिवाइड किया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब ए से डिवाइड करेगा तो नेगेटिव साइन है, तो दिस वुड बिकम दिस। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं एक बार, हमें ऑलरेडी पता है इस कंडीशन से दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसको ए से डिवाइड करेंगे तो सी बिकम्स लेस देन 0, क्योंकि ए सी अपॉन ए वुड बी 0 बाय, नेगेटिव नंबर है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, तो सी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सी वॉज नथिंग बट f22 एट x नॉट y नॉट। तो इस एजम्पशन में, द फर्स्ट एजम्पशन में ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द केस दैट c इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, ठीक है। ये जो सारी कंडीशंस है ए बी एंड सी की, ये वाली कंडीशंस तीनों, दीज आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस। And these are sufficient conditions but not necessary, ठीक है। So these are sufficient conditions for a point to be, these are sufficient conditions for a stationary point to be conditions for the stationary points to be local max, local min or a saddle point, but these are not necessary conditions, ठीक है। ये बस sufficient है, and none of these condition is necessary, they are not necessary। Okay, now moving to one example, we'll do two more examples. Example 17.9, find the stationary points of fxy, where fxy equals to minus x cube plus xy plus y square plus x. So we know the stationary points satisfy this condition. This is equals to 0, this implies, and the first order derivative, first order partial derivative should be 0. So the condition that we get is minus 3x square plus y plus 1 equals to 0. From the second equation we get x plus 2y equals to 0. Now we need to find x and y which satisfy both a and b. तो इससे क्या आ जाएगा, x equals to minus 2y, so y equals to minus x by 2. इसको हम a में पुट कर देंगे, so we'll get minus 3x square minus x by 2 plus 1 equals to 0. This would become 6x square plus x minus 2 equals to 0. Quadratic equation है, we can solve x equals to minus 1 plus minus b square minus plus 48 upon 12. So this is coming out to be minus 1 plus minus 7 by 12. This is minus 8 by 12 comma 6 by 12. So x is coming out to be minus 2 by 3 and half. So this is the value of x that we are getting, and y क्या था, minus x by 2. तो अगर if x is minus 2 by 3, then y is minus 2 by 3 into 1 by 2, so minus 1 by 3. So the first point that we are getting is x equals to minus 2 by 3. Sorry, I'll write these points in black. X, y are coming out to be, first is minus 2 by 3 comma 1 by 3. So minus of minus, minus 2 by 3, minus times this would cancel out. And the second case, when x is half, so y is minus 1 by 2 into 1 by 2, so minus 1 by 4. So
So second case is when x is half, y is minus 1 by 4. So we are getting this. Now let's check whether they are saddle point maxima or minima. AB minus c square, sorry, AC minus b square, AC minus b square, and accordingly we can classify what they are. Now A is f double dash x. So initially our point is, the function is fxy equals to minus x cube plus xy plus y square plus x. We had already found f1 dash xy. This was coming out to be minus 3x square plus y plus 1. f2 dash xy was coming out to be x plus 2y. Right? Now f11 double dash xy is minus 6x, and f22 double dash xy is, with respect to y, this is 2. Right? And f12 would be f12 double dash equals to f21 double dash, which is equals to 1. So irrespective of the scenario, what we have is f12 is 1, so basically b is 1 throughout. C is this, so this is C, this is A, this is C, and this is B. So we are getting the value of B as 1 1. C is coming out to be 2 2. Now looking at A is minus 6x. So in the first case it would be minus 6 into minus 2 by 3. Minus minus cancels out, this 2, so this becomes 4. In the next case it is minus 6 into half, which is minus 3. So AC minus b square, this becomes 8 minus 1, 7. So this means this would be a local maxima, because okay, no, this won't be a local maxima. Okay, let me check the condition. A is positive, AC minus b square is positive, so it is local minima. Okay, so this condition is coming out to be because A is positive, and AC minus b square is positive, so this is local minimum. Similarly, the case here, AC is minus 6, then minus 7, and now determinant is coming out to be 0. AC minus b square is coming out to be 0. If this is less than 0, we have a case of saddle point. So we have a case of saddle point here. Okay, just one last question we'll do and just go through this calculation. So this is example 17.10. Classify the stationary points of fxy equals to x minus 2 e to the power x square minus x e to the power y minus 2 square. So firstly, what you're supposed to do is f1 dash xy should be 0, f2 dash xy should be 0. These are the first order conditions. ठीक है, पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, क्या आ रही है f1 dash xy. So this would become
e to the power y minus 2 whole square is common, then derivative of x minus 2, this, plus x minus 2 times 2x minus 1 times e to the power x square minus x. So we can take power y minus 2 square common, e to the power x square minus x common, 1 plus x minus 2 into 2x minus 1. So you can simplify this. This term would remain as it is, and this would become 2x square minus 5x plus 3. So we have this thing. So e y minus 2 square power x square minus x times this. So this is always positive. So this can be 0 when we have this quadratic equation to be 0. Now you can solve for this. So x equals to minus b plus minus b square, which is 25 minus 4 into 3 into 2, 24 upon 2a is 4. So this is coming out to be 5 plus minus 1 by 4, 5 minus 1 by 4, which is 1 comma then 3 by 2. So x is coming out to be this. Now similarly, checking for f dash 2 dash xy. So this would be, okay, this would be common only, x minus 2 e to the power x square minus x. Then the derivative is 2 times y minus 2 e to the power y minus 2 whole square. So if this is 0 only when this is positive when y equals to 2. So the points that we have are 1 comma 2 and 3 by 2 comma 2. Now these are the points that we have, right? A, correspondingly we need to find B, then C, then AC minus B square, and then the classification. Now I would expect you to solve this. A is, we know what is A. A is f11 double dash. B is f12 double dash, and C is f22 double dash. Find them and put the values of x and y as 1, 2, and then 3 by 2 comma 2. You will get the final solution. So I'm giving you 2 minutes to solve it. You have this f dash 2 xy with you here and f1 dash 2 xy here. So I'm giving you 5 minutes to solve this on your own, and then I'll put the values. I expect you doing these questions on your own.
Okay, I'll give you one more minute to find AC minus B square at these 2 points. So you will see the value is coming out to be minus 1, 0, minus 2. So AC minus B square would become 2. This is positive, A is less than 0 and this is positive. So we have a local maxima. We have a local maxima at this point. The value of the local maxima we can find by putting 1, 2 in the our objective function. Similarly, in this case we have A equals to 3 to the power 4, B is still coming out to be 0, C is e to the power minus 3 by 4. So this becomes e to the power minus 3 by 4. Okay, so in this case, this value, okay, now look at the scenario what we are talking about. Okay, so A was coming out to be this, B 0, C is minus this. The final value is minus this. So e to the power minus 3 by 2 is positive, but with the minus sign it becomes negative. Since AC minus B square is negative, we have a case of a saddle point at 3 by 2 comma 2. So with this we are done with, okay, are differentiating this is also easy. We had this, इसको हमें with respect to x करना था, वापस we'll use the product rule and keeping this as constant. Then this with respect to y, take these things as common and then differentiate this using the product rule, and इसको ही with respect to x कर दोगे तो that will give you f12 or f21. ठीक है? So with this we have completed 7.4 and I'll be starting with convex set in the next class. Okay, thank you.